Namaste everyone and welcome. Today we'll be discussing the IIM Amritsar CV form that you are expected to fill for the next stage of the process. One interesting part in the IIM Amritsar form is the expectation for you to fill your latest CV. तो आपको अपना latest CV upload करना है जिसकी file size has to be less than 2 MB. So I think the primary discussion that we'll be having as far as this session is concerned is understanding the important factors that you need to take due care about when you are uploading your latest CV, because this is typically not a trend across some of the other top B schools in the country. It is generally taken very lightly कि अगर CV upload करना है तो जैसा बना है हमारा CV वैसे ही upload कर देते हैं. But understand, because they are asking a CV from year end, the discussions in the interview will typically revolve around every information that you have shared in that CV, and therefore शायद इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है CV. सो हमारा प्राइमरी फोकस उस पर रहेगा, ऑल्दो आई विल टेक यू एंड टू एंड as you have discussed in some of the other videos, what is the typical process. So start करते हैं हम अमृतसर की फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के लिए. So this is how your typical portal will look like. Once you log in, there will be a dashboard, and dashboard पे you'll get the basic details to upload your CAT का scorecard or whether the CAT scorecard is successfully saved or not. I've taken a better screenshot of the same to help you understand this. So CAT का scorecard यहाँ पे corresponding file आपको choose करनी है. Once this is saved successfully, then there are instructions for filling education qualification details. Very similar to the details that are expected in some of the other B schools. So for class 10th and 12th, if you do not possess the degree certificate, you may upload the mark sheets. Certificate नहीं है तो mark sheets आप upload कर सकते हैं. If you have not completed bachelor's degree, then please upload an undertaking from your college stating the same. तो आपको ये corresponding undertaking submit करना है in the format as given on the CAT website. जैसा CAT website पे format given है, उसी same standard format में आपको ये undertaking submit करना है that you are still pursuing your bachelor's degree. You are required to upload the GPA to percentage conversion formula for class 10, 12th and bachelor's degree. तो आपको कन्वर्जन फॉर्मूले की पीडीएफ अपलोड कर देना है. जो भी आपका करस्पॉन्डिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करता है उसकी पीडीएफ अपलोड करना है. और अगर वो नहीं है, इन केस योर यूनिवर्सिटी और बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड अ कन्वर्जन फॉर्मूला, upload an undertaking stating the same in the format given on the IIM Amritsar admission portal. तो आपको एक अंडरटेकिंग अलग से सबमिट करना पड़ेगी टू शेयर दिस पार्ट कि अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी बोर्ड कोई कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं रखता है तो देन यू हैव टू स्टेट द सेम. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करेंगे. योर मार्कशीट्स, करस्पॉन्डिंग डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड CGPA to percentage conversion certificate. Maximum file size format has to be PDF. Maximum file size is 2 MB. So please take due care to fill these details. आगे बढ़ते हैं. When you go ahead, again they are asking for professional qualification for CA, CS, CFA, ICWA. You can include FRM here. Any other professional qualification that you have had, वो आप यहाँ mention कर सकते हैं. Corresponding mark sheet and the corresponding degree or certificate that you have for the same. जो सबसे interesting part है वो ये है, please upload your latest CV. So you are expected to choose a file which effectively be your latest CV, and the file size has to be less than 2 MB. So this discussion will now revolve around understanding how to make the right CV, because बहुत सारे students ये गलती करते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन का CV रहता है, ग्रेजुएशन का CV वुड मीन कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो आपने एक स्टैंडर्ड CV शायद कभी बना के रखा था, वही का वही एज इट इज आप अपलोड कर देते हैं. सो दिस इज वन मिस्टेक दैट आई वांट यू टू स्ट्रिक्टली अवॉइड कि आप अपना एज इट इज बना बनाया CV अपलोड कर दें. सो दिस इज वेयर आई विल कवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड्स टू द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. तो जो कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो जनरली जब भी CV का टिपिकल फॉर्मेट देखेंगे, यू माइट फील कि दिस इज गुड इनफ. ऐसा एक CV अगर हम अपलोड कर दें विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंस्टेड ऑफ नो नेम, सो इट माइट वर्क. अंडरस्टैंड दिस पार्ट. यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना करस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी लिखा है, and this is a very common mistake. A lot of us have very casual names as far as email IDs goes. So email ID को लेकर यहाँ पे कैंडिडेट का email ID है rockstar_123, and I'm pretty sure अगर आप अपने आसपास के colleagues, friends, कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा देखोगे, a lot of students might have some very casual uh, uh, ID names when it comes to email IDs, which is completely not expected of you when you are applying for a professional position. So understand this part कि अगर IIM अमृतसर के application की बात करेंगे तो this is a big no.
प्लीज इंश्योर कि आपका ईमेल आईडी बहुत प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो। नहीं है, इट इज अ गुड टाइम टू क्रिएट वन, बिकॉज दिस सेम जीमेल आईडी और वट एवर प्लेटफॉर्म यू माइट वांट टू यूज, वो करस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी आपके लिए आगे जिंदगी भर तक यूज में आएगा। सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। Also, please make sure that your details about address, date of birth, etc. are filled in correctly. कई बार कॉलेज के आप पास आउट हो चुके हो, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। सो यू यूज टू स्टे इन अ करस्पॉन्डिंग हॉस्टल ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, बिकॉज सीवी उसके बाद अपडेट नहीं कराए, आपने एड्रेस की डिटेल्स अभी भी कॉलेज के कैंपस की ही डाल रखी है, दैट यू बिलोंग टू दिस मच, दिस पर्टिकुलर रूम नंबर, दिस हॉस्टल, एंड सो ऑन द कॉलेज नेम। मेक श्योर कि आप अपने एड्रेस की डिटेल्स को करेक्टली वेरीफाई कर लें। Objective, you're expected to keep a title objective and then mention your long term career objective. Always remember, जब भी हम objective की बात करेंगे, as far as application to B schools, we are thinking long run. Obviously it is very clear that you want to pursue a PGP program or an MBA program from the corresponding institute, so no need to write that I want to pursue a program from your institute, that is my objective. No, that is but obvious and clear to everybody involved. They are wanting to understand your long term career objective. Is it compulsory field? क्या objective लिखना compulsory है? नहीं है compulsory. So is it advisable, preferable? Yes. So I hope I have answered both the questions. क्या compulsory है? नहीं. Compulsory in the sense CV में there are no rules, there are only guidelines. So it is suggested that you keep an objective because it gives the reader an idea as to what are your thoughts with regards to career goals. तो आप preferably रखें, but please इस तरह का objective ना रखें, which on the first read itself gives an impression to work in a challenging, competitive, and dynamic environment that offers wide spectrum of learning, which enhances me to grow and innovate and create brands the world will reckon with. So this is too generic a career objective which could fit in any kind of role, which could fit in any kind of further educational requirement. So I am अमृतसर को ध्यान में रखते हुए आपका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव इन द सेंस क्या है, दैट यू विल बी एबल टू अचीव बिकॉज यू आर गोइंग टू परस्यू एजुकेशन फ्रॉम दिस टॉप बी स्कूल। सो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत इंप्रूव हो सकता है अगर इस तरह का कोई जेनरिक ऑब्जेक्टिव है। एंड एज आई सेड, प्लीज से नो टू चैट जीपीटी, please say no to ChatGPT. Please don't do this. In fact, I was just reading a very interesting, in fact, this is something that has been shared over the years from the students. बट एक कॉन्सेप्ट होता है एकेडमिक डिसऑनेस्टी का, बहुत सारे टॉप बी स्कूल से चलता है, स्पेशली टॉप बी स्कूल से एक एबीसी, जहां पर आपके एग्जाम्स में अगर आपका गलत आंसर काफी ज्यादा लोगों से मैच कर रहा है, तो देन इट इंडिकेट दैट यू माइट हैव चीटेड ऑन द एग्जाम, है ना। सो एकेडमिक डिसऑनेस्टी के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू वैलिडेट why you gave a certain answer which was a wrong answer, which was also given by a lot of other people in common, maybe because you cheated. And therefore जब भी प्लेजरिज्म की बात करेंगे, जब भी चीटिंग की बात करेंगे, तो टॉप बी स्कूल टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। एंड देयरफॉर अ बिग नोट टू दिस, सम पीपल माइट से कि आप अपना आंसर खुद से फ्रेम कर लें, चैट जीपीटी से रीमॉडल करवा लें। आई अगेन स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट दैट, लेट इट बी एज ह्यूमन एज पॉसिबल। हाँ, इफ इट सो हैपेंस कि आपके आंसर खुद के ओरिजिनल बनाने के बाद भी इट लुक्स somehow inspired from ChatGPT or some standard tools, so be it. When you'll speak, it will become natural that it is an answer originally created by you only. So academics की बात करते हैं। अब इसमें इस mistakes to avoid में what is the problem with the academics? Currently undergoing bachelors of commerce from this college with an aggregate. There are no details mentioned. Although आपने details वहाँ mention कर दिया है, बट अगर आप अपना सीवी अपलोड कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू एंटर द डिटेल्स ऑफ ऑल द ईयर्स, इफ रिक्वायर्ड ऑल द सेमेस्टर्स। इफ यू वांट टू क्लब टू सेमेस्टर्स एंड मेंशन इट इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स, प्लीज डू सो। एटलीस्ट जो एकेडमिक की डिटेल्स हैं वो थोड़ी ज्यादा शेयर करें, रादर देन जस्ट सिंपली शेयरिंग अ समरी दैट यू आर अंडरगोइंग विद द करंट एग्रीगेट ऑफ दिस। This was available to them in the mark sheets as well, but there are other details that you can fill. For example, you were a college topper, you were a subject topper, you got a medal for a particular academic distinction that you got. So maybe I'll show you some sample examples as well later on, जिसमें you'll be able to find कि academics की highlight हम कैसे कर सकते हैं। But this is something that I'll strongly advise कि आप इतना सा detail छोड़ के academics को complete ना करें। Presentations में maybe you have presented a seminar at particular conclave, maybe you have gone for paper presentation competitions, conferences, anything on these lines. यहाँ पे what is the problem? There is no mention of year,
जहां पर भी आप कोई एक्टिविटी मेंशन कर रहे हैं, वेदर इट इज अ को करिकुलर एक्टिविटी, एन अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एन अचीवमेंट, एनीथिंग दैट यू हैव परस्यूड सीरियसली, मेक श्योर कि आप करस्पॉन्डिंग ईयर हर जगह लिखें। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट कि आप ईयर मेंशन करो, ईयर 2019। अगर आप ऐसा करके क्लोज कर देंगे, देन द पैनल विल हैव अ फेयर आइडिया कि अच्छा इट इज ओनली 4 years ago that we are talking about, not something that you might have done in childhood or at an early age of your career. So year is extremely important, plus it gives them a idea of timelines in what year you did what many activities. तो एक ग्लांस करके ईयर से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपने किस ईयर में क्या क्या करा। प्लस इट डजंट गिव any standard details with regards to quantifying the data. This is something that you might have heard a lot. Quantify, quantify whatever data you can quantify. For example, if you have presented a seminar at a certain conclave, what were the total number of people that attended that seminar? So you can say that this was attended by 376 participants. Now this is quantifying certain information. A lot of times you might have activities where you have uh, taken a very enthusiastic part in college festival. And a sponsorship is one common activity that almost everybody in college is directly or indirectly involved with. So आप बस ये लिख दें that I was actively involved in college sponsorships does not make that kind of an impact when you are actually able to quantify and say that you were able to generate a sponsorship of 2.5 lakhs on your own and managed a total sponsorship of 2 million. तो 2 मिलियन की स्पॉन्सरशिप आपने मैनेज करी है और 2.5 लाख तो आपने खुद जनरेट करी थी वाया गोइंग टू डिफरेंट कॉर्पोरेट्स एंड आस्किंग फॉर some kind of an engagement or a collaboration, and you were able to convert those. Now how will you get proofs of the same? You can get this in writing from the college administrators in terms of faculty in charge, in terms of dean, registrar, कॉलेज के लेटर हेड पे उनके सील साइन के साथ आप ये मेंशन करवा सकते हो दैट यू आर द कॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, you were able to generate this much scholar sponsorship for your festival and this was the corresponding data. ये सब वैलिड प्रूफ माना जाएगा अगर आप ये कर पाते हो. सो जब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्लीज इंश्योर द लेवल, प्लीज इंश्योर व्हेन आई से लेवल, was it a national level paper presentation, was it a college level, was it a state level, कितने अलग अलग रीजन से डेलीगेट्स आए थे. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव अटेंडेड कॉन्फ्रेंसेज वेयर देयर वेर delegates from 67 countries. Now that itself shows the level of the activity that you've participated in. अगर 67 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अचीव करा है, प्रेजेंट करा है, वेयर पीपल फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज वेर लिसनिंग टू यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट देन जस्ट शेयरिंग दिस कि ऐसा कुछ हुआ था. सो सिमिलरली project on ratio analysis for banking industry is a very college level project that is typically a part of your college activity. तो उसकी हाईलाइट बेटर हो सकती थी कि आपने कौन सी कंपनीज एनालाइज करी, उसका फाइनल रिजल्ट क्या था. सो टिपिकली अ गुड सीवी इज रिजल्ट ड्रिवन. आपने जो भी कुछ एक्टिविटी करी उसका क्या रिजल्ट निकला. सपोज यू डिड सम एनालिसिस सम प्रोजेक्ट इन योर कॉलेज, क्या करा उस प्रोजेक्ट से, क्या हासिल हुआ, व्हाट वाज द एंड ऑब्जेक्टिव, वाज इट सक्सेसफुल, कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंडस्ट्री, will you require some funding to get it implemented at a large scale, did you think of such ideas where you were able to get some amount of funding to actually implement it at a certain level, what did the college think about it, what kind of appreciation you got for the project that you did. तो बहुत सारे ऐसे लर्निंग के एस्पेक्ट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कहीं पर भी ईयर मेंशन नहीं है. एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम है the way it has been articulated. Look at the first bullet point and believe me, you might feel or find this funny sometimes, but believe me, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीवी आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे उन्होंने हाईलाइट करके लिखा है गॉट फर्स्ट प्राइज इन बैडमिंटन कॉम्पिटिशन इन स्कूल. व्हाट डू यू मीन बाय गॉट फर्स्ट प्राइज? आई मीन ट्रांसलेट करते हैं इसको हिंदी में. हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? मुझे फर्स्ट प्राइज मिला. तो इट गिव्स द फीलिंग कि कुछ चीजें बट रही थी, उसमें मेरे नसीब में फर्स्ट प्राइज आ गया. इज दिस द राइट वे टू आर्टिकुलेट इट? कैन यू से सिक्योर्ड, कैन यू से अचीव्ड? तो आप सिक्योर्ड यूज कर सकते हो वहां पर करस्पॉन्डिंग वर्ड. यू कैन यूज अचीव्ड एंड दीज टिपिकली वर्ड्स आर कॉल्ड एज पावर वर्ब्स. इनफैक्ट आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ पावर वर्ब्स एट द एंड. Think of the difference it creates. Got the first prize and secured the first prize. इनफैक्ट वो टोन पढ़ने में ही एक डिफरेंस समझ में आ जाता है. गॉट द फर्स्ट प्राइज गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग.
secured the first prize, achieved the first prize, was able to beat 139 participants to be rewarded the first rank and so on and so forth. जब आप quantify करते हो, right verbs use करते हो, action verbs use करते हो, power verbs use करते हो, तो then it creates a different feeling altogether. So badminton competition कितने participants से, year कौन सा था, got the third prize, got is not the right word. Received, अच्छा grammatical errors are a big no. Received letter of appreciation for speech in college. So received is again मिल गया, मिला था. But अंडरस्टैंड कि यू कुड यूज बेटर वर्ड्स. तो जब आप अपना सीवी बनाएं, प्लीज डोंट बी एट द मर्सी ऑफ द अर्लियर सीवी दैट यू हैव क्रिएटेड. इनफैक्ट जैट के एसे में एक बहुत अच्छा एसे का टॉपिक था, थिंग्स दैट मैटर मोस्ट शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द थिंग्स दैट मैटर लीस्ट. तो आई गिव यू टाइम टू थिंक ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टॉपिक, बट प्लीज इस तरह के सीवी के ऊपर डिपेंडेंसी ना बनाए. डोंट बी कैजुअल. Again, as I said, in the interview stage for other colleges as well, they might open your folder. So IIM Calcutta ने, IIM K ने आपसे सीवी नहीं मांगा है, बट जब आपका वो फोल्डर ओपन करेंगे, अगर करते हैं, तो फर्स्ट पेज पे they'll expect a good CV. So in general, in life, you are going to have a lot of use of this. So please make sure that you take due care. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, वहां पर भी हम कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जो अवॉइड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, ये look at the column of hobbies: sketching, playing cricket, listening to music. This looks very plain. Hobbies के साथ एक column हो सकता है hobbies and interests, because not all of these activities may be just hobbies. There might be few interests of yours that you would want to share. Difference between hobbies and interests I've already covered in some other form filling video, so I'm not going there. और sketching की जब हम बात करते हैं, तो can you make it more personalized? What do you mean make it more personalized? क्या आप sketch कुछ भी कर लेते हो? You are able to sketch anything and everything that comes in front of you. Yeah, you are good at sketching human faces. You're good at sketching animals. You're good at sketching the portraits of nature. Anything that you feel should come here to make it more personalized. So sketching using charcoal, sketching using pencil, normal pencil. What kind of instruments, what kind of tools do you use when you think of sketching? Similarly, playing cricket. So elaborate a bit more as to what do you do when you say play cricket, because play cricket के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक 100+ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. प्लेइंग क्रिकेट कैन ऑल्सो मीन कि छत पे हमने वन टिप वन हैंड वाला क्रिकेट खेला है, गली में वन टिप बोथ हैंड्स वाला क्रिकेट खेला है, ग्राउंड में एक ही प्लेयर कॉमन हो जाएगा दोनों टीम्स के लिए, उस लेवल वाला क्रिकेट खेला है. देयर कुड बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस विद डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट सिनेरियो एंड डिफरेंट सेटिंग्स. व्हेन यू से playing cricket is my hobby, you could mean all of these things as well. Sir, all kinds of cricket. I've played at a state district level as well, and I've played, plastic ball wala cricket or tennis ball wala cricket as well. So it may mean a lot of things. Try and elaborate a bit more when you say what kind of a hobby is playing cricket. Similarly, listening to music becomes very generic. Please make sure that you add something specific to it when you want to maybe include names of singers, names of musicians, names of rock band, anything that adds value. पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है. जब आपने पिछली स्लाइड में अपना नाम और बेसिक डिटेल्स फिल कर दिए हैं, तो इन अ सीवी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ योर फैमिली डिटेल्स. फैमिली डिटेल्स की जरूरत नहीं है. आपके फैमिली में सिबलिंग्स, पेरेंट्स, कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है. सिमिलरली डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, और अगर डिक्लेरेशन करा भी तो प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज. वॉट एवर हैज बीन मेंशन्ड अबव, again, no need to spell it out to you why it seems funny. Whatever has been mentioned above is true and correct to the best of my knowledge, date, and so on. If at all you mention declaration, then please make sure that you sign the corresponding document as well on that day, which is a tedious task. Simply speaking, avoid declaration. कोई जरूरत नहीं declaration की. It is but natural और understood कि जो भी आप state कर रहे हो अपने CV में वो correct ही है. आप genuine information ही share कर रहे हो. ठीक है? Quickly आगे बढ़ते हैं. CV mistakes में technical skill set. Try and look at the technical skill sets that corresponding person has shared. This is typically for, let's say, an engineering graduate in maybe electronics and telecommunication from some of the top engineering colleges. So अगर electronics, telecommunication या maybe IT में technical skill set elaborate कर रहा है person, so this might be a very good pointer when it comes to campus placement. पर अगर आप MBA एंट्रेंस में कॉलेज एडमिशंस के लिए सीवी अपलोड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू राइट सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट यू आर कंफर्टेबल विद, लाइक मैटलैब, ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग,
relevant courses taken, for example, is completely irrelevant. Operation system or yeah, operating system. So Windows is one operating system. Ubuntu is another that you're comfortable with. या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, VLSI डिजाइन पढ़ा है. This is not relevant. All these subject details are available in your mark sheets that you have uploaded there. ये details की जरूरत नहीं है. It is occupying a very important part of the space that you have available in your CV. And again, coming to that point, if possible, when I say if possible, try and make it possible, make it happen. If you're a fresher or have work ex less than 6 months, less than 1 year, your CV should be strictly one page, not more than that. एक पेज का सीवी होना चाहिए, which is a standard you know template or process that is followed across top B schools, because nobody has the time to go through 3-4 pages. किसी के पास टाइम नहीं है कि इतने सब प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन या कोर्सेज अंडरटेकन की डिटेल देखें. They just want to look at the highlights. If you cannot highlight your entire achievements in a summary format in one page, then they are least interested to go into details and browse. कोई रूल नहीं है, किसी ने 2 पेज का सीवी अपलोड कर दिया, 4 पेज का कर दिया तो डिजास्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू. बहुत इजीली आपका एक पेज में सारा डेटा समराइज फॉर्मेट में आ सकता है, विच लुक्स वेरी इजी टू रीड, इज कन्वीनियंट एंड इज अ जनरल प्रैक्टिस दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इतनी डिटेल्स ना डालें. इनफैक्ट आई शेयर द टेम्पलेट जहां पे लास्ट की ये कॉमन हेडिंग्स हैं जिनको आप फिल कर दें, तो दैट शुड बी मोर देन गुड इनफ. तो ये courses taken is not required. Major project में look at the description. Typically very relevant for a campus placement interview kind of a thing, but RFID based door access control system using this particular starter kit, it is based on Verilog programming to interface RFID tags and trans receiver with this kit for sending requests. Not required. हटा दो. If at all you feel, just write one line as to why that project, what was the name of the project, what was the learning you had, and the application of it. एक लाइन में आ जाएगा. Corresponding year 2021, 2020, whatever. तो इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं है. Then look at positions of responsibility. Chosen by peers as student warden. Where is the year mentioned? Not mentioned. Year, scale, quantifiable data कुछ भी नहीं यहाँ पे. There is no quantifiable data here. Appointed as class representative. How many people were there in class? Let's say 132 people थे and you were appointed as a class representative, compared to there were 7 people or there were 2 people in your project and you were asked to be the project lead. दो लोगों में project lead होना does not signify a considerable achievement, but 100 लोगों की batch में representative होना and then highlighting the responsibilities that you undertook, the corresponding year, what you learned, achieved. Maybe you are expected to elaborate on this in one single sentence, जो बड़ी easily किया जा सकता है. So these are the areas of improvement when it comes to this. आगे बढ़ते हैं. I don't know whether this is clearly visible or not, but अगर हम देखें इसमें there are issues with regards to the way objective has been created. Objective बहुत brief है, but again it is very vague in the sense to be a successful businesswoman with the end goal of becoming the CEO of the best company at that time. Now this becomes very vague, although it is directed to be very specific, but बहुत vague है. CEO of the best company at that time. Now best company in itself becomes very subjective. तो ऐसा CV रखना कि मुझे उस टाइम की, जब मैं CEO बनूंगी, उस टाइम की जो प्रिवेलिंग बेस्ट कंपनी रहेगी. तो बेस्ट कंपनी, आर यू टॉकिंग अबाउट फोर्ब्स रैंकिंग्स? Why are you being this particular? How will you know that you will want to be the CEO? So in terms of goal, this looks like more of a desire or a dream. ये desire या dream type का आंसर है, which in reality, in practice, will be very difficult to be achieved. Plus, it is very vague. तो ऐसे objectives आप ना लिखें when trying to be specific. This is a big no. ठीक. Similarly, issue with the Gmail ID. I love my name. ठीक है, तो ये वाले Gmail IDs प्लीज अवॉइड करें. इनफैक्ट एजुकेशन का टेबल इज फाइन. मे बी आई सजेस्ट कि यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लें और यहाँ पे आप रिमार्क या हाईलाइट डाल सकते हैं जहां पर यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन डिस्टिंक्शन, पोजीशन, गोल्ड मेडल, अवार्ड. Extracurricular activities, look at the way the person has described the activities in the form of a paragraph. Not recommended, not an easy read. आपको हाईलाइट समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर बोल्ड नहीं करा हुआ है टू हाईलाइट सर्टेन पार्ट्स. आई एम एन इंटरनेशनल लेवल चेस प्लेयर, आई हैव प्लेड चेस. I have played chess. देखो कैसे लिखा है,
not recommended. Useful sentences. I have, HAVE. Played chess since the age of 7. I've won over 100 national, international medals, and so on. I have even won individual championships at national. Not a good idea. Please create bullet points for all your achievements. आप bullet points बनाएं, year mention करें, bold करें, highlight करें जहां पर आपको लगता है कि आप highlight कर सकते हैं. This would make a lot of sense. So extracurricular activities वाला part is not a good idea. Key skills not required at all. Communication, team player, hard working, meeting targets, discipline, planning, organizing. आपके CV में ये skills का column होना ही नहीं चाहिए. Not required. तो प्लीज मेक श्योर कि आपके अगर सीवी में इस तरह की गलतियां हैं, so now is a good time to have a look, rework on your CV. If you're a part of the admit sure batch, make sure that you send the CV for review. अगर नहीं है, there's still time for you to join the batch and get things done. एक standard template that I'm sharing, ये standard template can be very useful for you to create CV in terms of identifying कि कौन कौन सी headings हो. यहाँ पे you will share your basic details. So personal details like name, email ID, contact number. Address is optional. You may fill the address, you may not fill the address. But broadly, आपका नाम, email ID और phone number. Everything preferably has to be left aligned because that is the modern format of creating CVs. So left alignment, सब कुछ left align हो. Make sure that you use the same font type and same font size everywhere for a certain category. Font type भी same हो. प्लीज चेक कर लेना कि आपका एक फॉन्ट एरियल हो रहा है, एक टाइम्स न्यू रोमन हो रहा है, एक गिल सैंस हो रहा है. देयर आर 3, 4 different fonts being used. Does not make a lot of sense. Similarly, different font sizes. At best, and I'm strongly recommending, at best आप दो अलग अलग फॉन्ट साइजेस रख सकते हो. दो अलग अलग फॉन्ट साइजेस वो मीन आपकी हेडिंग का फॉन्ट साइज लेट्स से 12 है और आपके जो कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज 11 है. अगर सीवी खाली सा लग रहा है एक पेज में भी, तो मे बी यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू at best 14, not more than that. 14 the size for headings and 12 the size for the content that you'll have. इसके beyond आपको नहीं जाना है अलग अलग different font sizes पे. Same is the case with font type. तो font type भी please formal use करें. Please don't use font types like Comic Sans. I think इतना expected है that you'll already know. Objective का title, when you create such headings के लिए special rectangles, make sure that they are aligned properly, कि वो सारे aligned हो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज एंड रिमार्क्स, प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, बुलेट पॉइंट्स. मेक श्योर कि आपके जो बुलेट्स हैं ये भी सारे प्रॉपर्ली अलाइंड हो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दिस कैन बी अ गुड आइडिया दैट यू स्टार्ट राइटिंग योर अचीवमेंट स्ट्रेट अवे सेइंग विनर, एंड विनर के बाद फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज के बाद इन नेशनल लेवल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन held at, participants were this much, the year was this much, winner second prize, in what competition, in what area, quantify the data and then mention the year. तो आप winner 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 जब लिखा हुआ है तो it effectively saying that you have won so many things. And if at the end you might want to say participated, so you can have a part where you'll just explain participated. So there'll be 4 or 5 achievements of yours where you won, and there'll be one odd achievement where you participated, or 2 odd achievements where you participated. There is a case with hobbies and interest. So last part hobbies and interest का आ जाएगा. Again, इसके अलावा आपको कुछ भी और डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर आप फ्रेशर हो. इफ यू आर अ पर्सन विथ वर्क एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की समरी आ जाएगी. सो वर्क एक्सपीरियंस की समरी इंक्लूड करने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो शेयर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट यू हैव हैड while working in that corresponding organization handling a certain project. जहां पर भी हो पाए क्वांटिफाई डेटा. फॉर एग्जांपल आपका जेई का स्कोर है, रैंक है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका क्या परसेंटाइल बनेगा. फॉर पीपल हु हैव गॉट वेरी गुड रैंक्स, योर परसेंटाइल विल सीम वेरी अट्रैक्टिव. You can correspondingly calculate the percentile and mention this. If you have performed at a certain event, let's say you're good at singing and you've been able to perform at an event or a concert where there were close to 500 plus people. So mention the approximate audience that was there. So you've performed live in front of an audience of 735 people. So that makes it that much more impressive. So quantify कर दें. Always try and keep it to the point and brief, है ना. And
यूज पावर वर्ब्स। तो पावर वर्ब्स की जो हम बात कर रहे थे उसको एक बार क्विकली देख लें। दिस इज द लिस्ट ऑफ पावर वर्ब्स दैट आई वांट यू टू मेक वेरी गुड यूज ऑफ। आई जस्ट रीड आउट फ्यू अचीव्ड, सो रादर देन सेइंग आई गॉट द फर्स्ट रैंक, मुझे मिल गई थी फर्स्ट रैंक समहाउ, वो फीलिंग देने की जगह यू कैन से अचीव द फर्स्ट रैंक, सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक। एडमिनिस्टर्ड, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब। Accelerated, accomplished, attained, brainstorm. So there is an idea that you were able to come up, and you want to include that because that is a very integral part of the project that you did or the activity that you came up with. So brainstorm, certified, cataloged, conceptualized, demonstrated, empowered, endorsed, enforced, engineered, enhanced, enriched. Fabulous, fabulous words for you to use, not just in your CV, but also in your answers. So, along with this, I'm pretty sure all of you are preparing your standard responses that you're going to give. Bullet points आप अपने दिमाग में रखना चाह रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन आया कॉमन एचआर क्वेश्चंस का, that tell us something about yourself, then what should I say? If they ask me about my strengths or weaknesses, if they ask me about standard HR questions, then you have already started working on some responses that you'll give. Make sure that you make very good use of these power verbs: enriched, envisioned, excelled at, executed. Something which is considered very fruitful, given the kind of activities that you take part while you're in college or in WorkX. If you've been able to execute something from end to end, you've taken ownership, started that thing, and completed it successfully. This is considered a big positive. Fostered, formulated, implemented, initiated, instrumented, inspired. So you were able to inspire a set of team or set of people. Again, a fabulous power verb to use. Monitored, negotiated. This is something that you can very well use while you describe your achievements with regards to sponsorship activities that you've been a part of. I have seen n number of different CVs of students, and simply students say that I was a part of the sponsorship committee. तो ऐसा लगता है कि वो कंपलसरी पार्ट था आपके करिकुलम का, जबरदस्ती आपको स्पॉन्सरशिप कमेटी का पार्ट बना दिया गया. Why to give such a kind of such responses when we can have better words like negotiated for the title sponsorship valued at INR 0.5 million. तो अब टाइटल स्पॉन्सरशिप आपने 0.5 मिलियन में दे दी है, looks much more impressive than simply saying I was a part of the sponsorship team where we were able to get the sponsorship because some faculty in charge called somebody and he had his connections और finally मिल गई. इसकी जगह आप ज्यादा बेटर verbs use कर सकते हो. Officiated, planned, prioritized, qualified, quantified, refined, reinforced, secured, spearheaded. So rather than simply saying leading, spearheaded is another interesting term that you can use. Supervised, tailored, validated, or visualized a certain activity in a certain manner. That was your role there. So these are some important parts that you can include, not just in your CV, but also in your answers. Ultimately, when you do these things, the ultimate objective from our end, while you're watching this video, will be to get that final verdict convert. In fact, this is something that I'll want a lot of people to have this in at the back of their mind, that whatever you're doing at this point in time is to have that ultimate objective of getting that coveted convert from the top B school that you're aspiring for. I think that's all from my side. I've already taken a lot of your time. I'll take a leave. Ciao. I think there are two more questions. Uh, you're not able to log in because the server is busy. Maybe you'll be able to log in after some time. Uh, just wait for some time. I think you'll be able to log in. Okay? So I'll finally take a leave. Bye.